Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim from the LUMS Office of Advancement. Welcome to another podcast. Today we'll be talking about the computer science programs being offered through the Department of Computer Science at the Syed Babar Ali School of Science and Engineering. For this discussion, we have been joined by two members of our Sabasi family, Dr. Agha Ali Raza and Mr. Abdul Hameed. Dr. Agha Ali is a faculty member at the Department of Computer Science. He is also a member of the Graduate Program Committee. And Abdul Hameed is pursuing his PhD program in computer science. And so we'll get into a very richer discussion with the faculty member, Dr. Agha, and with Abdul Hameed as well. Dr. Agha, I'm going to start with you. The computer science programs in Pakistan are being offered by multiple other universities that were established before LUMS was established. Why should someone opt for our university, our department, for an MS program or a PhD program in computer science? Thank you, Amar. Thank you. That's a great question. There are many institutes throughout Pakistan, and they're all offering these master's and PhD programs. But like the one thing that sets LUMS aside is that our programs, especially the graduate programs, are a very balanced blend of research and development. So different universities in Pakistan, and most of them actually, are focused right now on hands-on training, on development. So preparing people for the industry. The one thing which is usually lacking is proper infrastructure and support to allow research to thrive. So the entire culture, the ecosystem of research, that's missing. So even the institutes which are trying to promote this, to encourage this, even they sometimes due to certain restrictions, certain constraints, are not able to go the last mile. So LUMS के बारे में अगर आप ये कहें कि एक अलग चीज़ क्या है हमारी, तो वो बहुत decent blend है जो इन दोनों चीज़ों का है यहाँ पर. And how important is research in somebody's MS program? Great question. PhD opinion, because it's heavily research centric. What about research in MS? Yeah. How important do you think overall this aspect? So the master's program could be opted to from two different perspectives. एक है purely professional perspective, जिसके लिए so हमारा यहाँ master's program है भी दो flavors में. So we have a research master's and we have a professional master's. We don't call these that, we just call it an MScs program, but we have two tracks here. एक है जिसमें आपने 10 कोर्सेज करने हैं सिर्फ, ये वो है जो प्रोफेशनल ट्रैक होता है, इसमें कोई थीसिस नहीं है. दूसरा है जिसमें देयर इज अ थीसिस ऑप्शन. व्हेन यू गो फॉर द थीसिस ऑप्शन, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू डायरेक्टेड रिसर्च फॉर एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स. सो आपने 6 क्रेडिट्स की रिसर्च करनी है. एंड द गोल ऑफ दैट रिसर्च इज कि एटलीस्ट यू शुड पुश द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज अ लिटिल बिट. कुछ ना कुछ आप नया कॉन्ट्रीब्यूट करें, कुछ ना कुछ नॉवल करें. सो दैट इज वेयर यू बिगिन योर फॉर्मल ट्रेनिंग in directed research. So what research means is simply a training to grow the body of knowledge, to figure out, to orient yourself in that knowledge, and then to figure out, okay, how do I move forward? How do I answer, or at least try to answer questions which have not been answered before? So ये वो चीज़ है जो master's program में, if you are coming in from a research perspective, then it's important for you. So that's the thesis option of the master's. Okay. So we'll expand on that later as well. We'll talk about other, main research areas in which we're focusing these days at the Department of Computer Sciences. Before that, Abdul Hameed will come to you. So you're pursuing your PhD in computer sciences. Generally, it is thought that once somebody is done with their bachelor's in computer science, there's not much need, or at least for the longest time in the market, this has remained the dominant opinion. कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करने की ज़रूरत नहीं, then go for a general degree because you've got your technical skills, so then expand on them with a flavor of management science degree or something. Why should someone opt for this particular track कि वो आगे research में चले जाएं? And why did you opt for the PhD in computer science? You went a step ahead. So why did you opt for the computer science program? Right. Thank you. This is a great question. So first of all, currently computer science field is expanding so fast that there are multiple avenues, multiple areas are being added to this field, and there is a ever-growing need of going deeper into one specific area. So I think the research programs like Masters and PhD specifically prepare you for that training that you want to gain to go deeper into one specific area. So let's say if I do my bachelor's, I have touched many subjects, like 7 to 8 different areas, but there have been like 1 to 2 major courses in each of those areas. But Masters or PhD programs prepare you to take an in-depth training into any one of those areas. So let's say, take an example. I'm doing my PhD in machine learning and artificial intelligence. So there is a full chance to gain more knowledge and go deeper into that subject during that 4 years period of training that is being offered in PhD.
So the one thing that stands out is going deeper into one particular area. And the second thing is that computer science is a field where you have a real chance of making a significant impact. There are many real-world problems that are being solved by computer science daily, and you need proper knowledge, you need to be equipped with the proper skills, and you need to be trained in a particular manner. And I think what LUMS does is that LUMS provides you with that area or that ground where you are able to take that knowledge and apply those skills in a very practical manner. But that's the highlighting feature of the MS and the PhD program. So you talked about the application of the concepts that you learn through these programs at LUMS. So have we designed these degree programs in a way कि जिसमें आपको opportunity मिले that you can go to the industry, work with some tech companies, work on some real world problems? Does this program allow you to do that too? 100%, yep. So we have many research collaborations, like many of our projects are funded by Facebook. And those are some real impact problems, like we are working... So you said many of the projects have been funded by Facebook? Yeah, funded by Facebook. Feels familiar. Yep. So we are working, let's say, in detecting misinformation, detecting deep fake audios, deep fake videos. So those are some problems that are very much common in Pakistan as well as in underserved populations. So these are some problems where you get to collaborate with companies like Meta, Facebook, Microsoft, and these are the companies that are working actively on these problems. Let's say Google is developing a chatbot application, or it is developing some speech recognition application for Urdu. So that now they need help from the local people here in Pakistan. So LUMS is at the forefront of knowledge right now, and we have a real chance of collaborating with those international companies and making a significant impact in each of those areas. So it's not just the local companies, but it's also international companies, including Facebook, Meta, as a matter of fact, and other companies as well that you can work with during the program. I was not aware of this dynamic that we're working with Facebook and companies of that stature. But do you think that LUMS का overall जो हमारा brand है, it has anything to do with companies, with giant companies who are coming to LUMS and working with us? Or do you think this is an opportunity available to every other university in Pakistan? So brand भी और साथ वो credibility भी जो over the years LUMS की faculty ने establish की है. I think कि जो एक बहुत बड़ा advantage है LUMS को, वो ये है कि LUMS has invested a lot of effort into bringing in people from around the world जो कि best institute से पढ़कर दुनिया में आए हुए हैं, और उनको यहाँ पर gather करके वो environment देना है कि they can really focus on their research without worrying about a lot of other things, जिसको आप administrative कह लें या teaching कह लें, वो तमाम loads explicitly कम किए हुए हैं. And one of the main responsibilities of any tenure track faculty member at LUMS is to do their research. तो वो वक्त भी देते हैं, मौका भी देते हैं, evaluate भी उसी पे करते हैं. So ये वो है जिसको मैं ecosystem कह रहा था कि बहुत से इदारे कोशिश करते हैं लेकिन वो ये बाकी चीज़ों में अक्सर नहीं कर पाते. अब जहाँ तक collaboration का ताल्लुक है, आपको जानकर खुशी होगी, not just Facebook, Google, Amazon, other big organizations, ये एक दो नहीं, हमारे बहुत से projects fund कर रही हैं जो School of Science and Engineering में हो रहे हैं. I'm sure बाकी schools में भी हो रहे होंगे, इसमें तो certainly मेरे इल्म में है कि हो रहे हैं. हम खुद अभी ये project जिसका जिक्र अब्दुल हमीद कर रहे हैं, deep fake detection के ऊपर काम कर रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया. That's Facebook funded, and that's actually the second consecutive Facebook grant जो हमें मिली है, हमारे group को मिली है. So there is a faculty member from Econ department, Dr. Agha Ali and Dr. Ahsan Ayub Qazi and myself. हम तीनों उसके ऊपर involved हैं. And it's just one example of many जो कि यहाँ पे colleagues और जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं. और ये है international. So local collaborations भी इसी तरह से thrive कर रही हैं. So we have close collaborations with the local industry, with the government of Pakistan, with HEC. So we have 2 big centers here which have been established by HEC in SSC, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम भी हो रहा है, वो भी HEC फंडेड है. तो येस, इट इज़ थ्राइविंग राइट नाउ. अदर इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो डूइंग अमेजिंग. आई एम नॉट सेइंग कि किसी को मतलब वहाँ पे वो नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये है कि LUMS सर्टनली, जैसे आपने कहा ना, ब्रांड नेम भी और क्रेडिबिलिटी भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है. So now that you've mentioned कि हम काम कर रहे हैं, Google be working with, Facebook be working with other tech giants as well. So मेरा ख्याल है कि ये question तो करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं रहेगा कि what are the employment opportunities. Of course, it's not just academics, it's industry as well, and local and international too. You're in luck. But at the same time, if we talk about research, if we have to expand on that, what are some of those ways through which we are pushing the boundaries of research at the School of Science and Engineering, especially at the Department of Computer Science? Great question. So research को अगर हम थोड़ा सा categorize करें ना, तो you have your
theoretical and foundational research where you try to come up with new algorithms, new methods, new formalisms, new mathematics. So that's one line of research. Another type of research which is very relatable in our particular context for a developing country like Pakistan, is impact research. Research which produces an immediate impact on people's lives, on the society, on the economy within the country. एंड राइट नाउ जो आपको ये भी जान के खुशी होगी कि एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं एसएससी के अंदर एंड स्पेशली सीएस के अंदर, वो इस इम्पैक्ट रिसर्च से बिलोंग करते हैं. सो देयर इज़ अ लाइन ऑफ वर्क ऑन मशीन लर्निंग एंड एआई फॉर सोशल गुड. So how can these things be employed to improve upon precision agriculture? How can these things be employed to, for example, to reduce misinformation spread? How to detect deep fakes in audio and video? How to, for example, so this continues. Then there is another line of research which focuses on providing information access and connectivity to people who are low literate, who are non-tech savvy, who are poor, who live in areas where they do not have internet access. How can we provide them with internet access? पर यहाँ से अब ये रिसर्च मल्टीपल ब्रांचेस में चली जाती है. हमारे नेटवर्किंग के लोग हैं जो कि लो एंड फ़ोन्स के ऊपर उनको ब्राउजिंग अलाउ करते हैं, वेब पेजेस को लाइट करने की कोशिश करते हैं. हमारे इस तरह जो स्पीच वाला ग्रुप है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है कि इंटरनेट पूरे को स्पीच में इस तरह कर दो कि सिंपल कॉल के ऊपर आप इंटरनेट यूज़ कर सकें. सो सिंपल फ़ोन कॉल के ऊपर इंटरनेट यूज़ कर सकें. सो ये एक लाइन ऑफ रिसर्च है. इसी तरह से फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर रिसर्च हो रही है, प्राइवेसी के ऊपर रिसर्च हो रही है, एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हमारे जो लोकल सिनेरियो है वहाँ पर कितने लोगों को ये मालूम है कि व्हेन यू फॉर एग्जांपल इंस्टॉल एन ऐप और यूज़ अ वेबसाइट, व्हाट्स योर प्राइवेसी व्हेन यू आर गिविंग अवे योर डेटा. आपका डेटा कैसे यूज़ होना है और क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जो आप इस मौके के ऊपर दे रहे हैं. सो इसके ऊपर रिसर्च हो रही है. HCI यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर रिसर्च हो रही है. और ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसमें द फैकल्टी, द रिसर्चर्स, द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, दे आर रियली पुशिंग द बाउंड्री ऑफ नॉलेज. ये वो चीज़ें हैं जिससे पहले कभी नहीं हुई. और शायद अगर ये किसी डेवलपिंग कंट्री में नहीं होंगी तो फिर ये मार्केट्स अभी तक ऑफ इंटरेस्ट टू नहीं है जो डेवलप वर्ल्ड के लिए कि वो इस काम को करेंगे. तो ये करना यहीं के लोगों नहीं है. तो ये इम्पैक्ट रिसर्च में इसलिए चाह रहा था सामने लाना कि दूसरी वाली तो हमारे इल्म में होता है कि यस समवन कम्स अप विद अ न्यू थ्योरी, ग्रेट. But how does that impact people's lives now? So impact And I research think that does is that. very significant that we talk about research, and I'm grateful that you mentioned about the impact aspect of research, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वो पहले किसी ने रिसर्च की, किसी ने इंटरनेशनल रिसर्च की, and we're just trying to not exactly अगर replicate नहीं करे तो हम मॉडल तो वो यूज़ कर रहे हैं. But here we talk about how is this going to have an impact in the industry, in the lives of the people, regardless of the facet of the society they are from. लेकिन उसका इसमें impact क्या है? तो मेरा ख्याल है research has to be impact driven too. At the same time, I would like to let our audience know that if you're interested in applying to this program, when we talk about the admission criteria, you need to have 16 years of education if you're applying to the master's program, and 18 years of education if you're applying to the PhD computer science program. उसके अलावा आपके दो एग्ज़ाम्स होंगे. एक है जो हमारा LGAT एग्ज़ाम है जो कि बेसिकली इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होगा. सो मेक श्योर you're preparing for that as well. And then आपकी personal statement, letter of recommendations, and of course your complete online application must reach us by 11th April. So talking about the admissions, so what was your process like? आपने खसूसी तौर पे आपने कौन सा एग्ज़ाम जो है वो दिया था? GRE दिया था या LGAT एग्ज़ाम दिया था? जी बिल्कुल. सो आई गेव LGAT एग्ज़ाम. LGAT. जी बिल्कुल, LGAT पहले दिया था और उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन, एंड देन मैथमेटिक्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू जनरल मैथमेटिक्स एंड Right. एनालिटिकल रीजनिंग. कितना मुश्किल होता है So, एग्ज़ाम या कितना आसान था आपके लिए? जी, exam is of medium difficulty. You just need to prepare a bit for the exam, especially for the subject text test that I'm talking about, and for the LGAT as well. So both these exams are not very difficult. If you have sufficiently brushed up on your skills that you learned in bachelor's program, then you should be able to pass that exam with sufficient ease. And if we talk about the subject specific exam, so फिर हमें उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सो द सब्जेक्ट टेस्ट जो हमारा होता है कंप्यूटर साइंस का, उसके लिए इसेंशली अगर आपने बैचलर्स ठीक से किया है तो कोई ठीक खास से तैयारी की ज़रूरत नहीं है. अच्छा. यानी इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है. एग्जाम इसमें, और इट्स अ कंसेप्चुअल एग्जाम. कोई याद करने की चीज़ों को उस तरह से कोई ज़रूरत नहीं होगी. सिर्फ वो स्किल्स टेस्ट होंगी जिसमें हमारी एजम्पशन है कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के अंदर उसके बैचलर्स में जो 4 years का उसने किया है वो इंस्टिल हो चुकी होती हैं. दैट्स लाइक सेकंड नेचर टू देम. सो उस किस्म के क्वेश्चन से हम सिर्फ ये गेज करना चाह रहे होते हैं कि व्हाट वाज द, सो आर द नंबर्स, आर द ग्रेड्स व्हिच आर असाइन्ड टू दैट स्टूडेंट, आर दे
रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल एबिलिटीज़। तो वो जैसे कि आपने जिक्र किया, हमारी एक रिक्वायरमेंट जो मास्टर्स की ये भी है कि एटलीस्ट 2.4 GPA हो या 60% विच एवर अप्लाइज। तो ये जो 2.4 GPA की मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है, ये बेसिकली हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे होते हैं, वन कि वो सही से रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरा ये कि उसके बाद हमने फिर ऑब्वियसली सॉर्ट करना है एप्लीकेंट्स को। देयर इज़ अ बिग पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाई एंड वी डॉक्टर आगा, हम ये देखते हैं कि जब हम अपनी भी आउटरीच प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, वी लेट एवरीवन नो कि दिस इज जस्ट द मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू विल हैव टू फुलफिल, and this will just allow you to create an application and have your application considered at LUMS. तो 2.4 CGP अगर किसी का होता है बैचलर्स में और वो उसके साथ अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए, तो क्या एडमिशन होना आसान है, मुश्किल है? नहीं। सो दैट्स द, जैसे कि आपने कहा ना, यानी एग्जैक्टली वैसे ही है कि ये तो थ्रेशोल्ड है ना, इसके बगैर तो सिस्टम आपको एप्लीकेशन बनाने ही नहीं देगा। लेकिन जब आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, तो अब जो जितना ऊपर है उसकी उतने बेहतर चांसेस हैं। एंड वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग होलिस्टिकली। सो इट्स देयर बैकग्राउंड प्लस देयर परफॉर्मेंस इन द 2 टेस्ट्स जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं, प्लस द रिकमेंडेशंस दैट वी गेटिंग, प्लस देयर गोल्स एज रिफ्लेक्टेड बाय देयर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली देख कर और इन तमाम को कुछ वेटेज हम असाइन करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर वी सॉर्ट द एप्लीकेंट्स एंड देन वी चूज देम। द वन थिंग दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस एज वेल, हम ये कभी नहीं देखते कि उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या नहीं ये करने की। Yeah, So so we इसको have a factor need नहीं blind policy for हाँ, admission नीड at ब्लाइंड LUMS. पॉलिसी, Right. यानी वो बाद में आकर उस स्टूडेंट के दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू अप्लाई, सो टू गेट स्कॉलरशिप्स जो यहाँ पे मेरिट बेस्ड हैं या नीड बेस्ड हैं या लोन्स हैं, जो कुछ भी है, जिस तरह से भी वो इस चीज़ को करते हैं, वो बाद का मसला है। हम उनकी कैपेबिलिटी को जो है वो असेस करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, if I were to ask you, what is that one factor that plays the biggest role in you selecting a certain candidate? वो क्या होगा पूरी एप्लीकेशन जो इक्वेशन है उसके अंदर? सो एक को Would तो that be सिंगुलर the previous CGPA, उसका पर्सनल रिकमेंडेशन, उसका पर्सनल स्टेटमेंट रिकमेंडेशन, या उसकी मेरा ख्याल है PhD में तो शायद आप प्रेजेंटेशन भी करते भी हैं? है, बिल्कुल है। यानी द राइट आंसर वुड बी दैट इट्स अ मिक्स। ऐसा नहीं है कि कोई एक है, लेकिन रियली अगर मैं इस एंगल से कहूँ ना, जो हमारे स्टूडेंट्स अभी बैचलर्स कर रहे हैं, यहाँ मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं या कहीं भी मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, वो एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली ईजिली रिकवर नहीं होती ना, वो उनके GPA हैं। सो ड्यूरिंग योर बैचलर्स यू हेयर डिफरेंट टेल्स फ्रॉम एवरीवन कि ये कर लो और वो कर लो, वो कर लो, बेहतर हो जाएगा। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर आइसिंग ऑन द केक। द रियल केक इज़ योर GPA। इफ़ यू लूज़ दैट अ लॉट, तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको रिकवर कराने के लिए। तो इसलिए अच्छा GPA बैचलर्स में लेकर आएँ, और उसके बाद आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लें। ये दो चीज़ें अगर अच्छी हो गई ना, तो यूर इन अ वेरी सेफ जोन। अब आगे डिफरेंस आ रहा है आपकी SOP से, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स से। Okay, right. मेरे ख्याल है that also speaks to the myth that we see going around a lot in the market and everywhere, मतलब खास तौर से स्टूडेंट से कि GPA तो मैटर नहीं करता, GPA तो मैटर नहीं करता। कहने का एहसास हो रहा है कि जिसने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में LUMS में अप्लाई करना है, उसके लिए CGPA जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। एज आई मैंशन कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें PhD लेवल पे एक प्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व होती है। So you must have gone through the same process as well. What was that like? Was it daunting? Was it मतलब nerve-wracking? उस वक्त nervous थे आप? How did you ace the whole interview thing? Right. So mostly the research presentation that you give for admission to the PhD program is mostly based on your master's thesis. So the research that you have done during your master's, it is mostly a summary of that research. So if you have done your master's in a good way, and if you have done some research, you can easily present that in front of the committee members, and then it's not daunting in the sense that you need to prepare a lot for that. You just need to Are you just saying that because your professor is sitting in front of us? No. So I think अगर आपने अपने MS research के अंदर you have done some research and you have contributed a bit, then you can summarize that, prepare a presentation, and then present that in the research presentation for PhD. Let's bringing your attention to the student life overall. PhD में हमें लगता है कि a scholar must be studying all the time. Is that true? मतलब क्या LUMS में मतलब आपको बाकी opportunities मिलती हैं to go around, have fun while you're studying, of course? Right. जी बिल्कुल। LUMS में जैसे डॉक्टर आगा ने बात की कि there's an ecosystem, कि research के अलावा भी there's especially an opportunity of doing multidisciplinary research. So you can actually go into other departments, look what is going around, actually pick a research project that is being constituted of different areas. Let's say you pick a project that involves economics and as well as computer science. This is one of the highlighting factors that is there in LUMS. और उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट लाइफ की बात की, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप हमें हर वक्त पढ़ ही रहे होते। there are many opportunities to engage in extracurricular activities. Like आपका typical day कैसा होता है? Typical day is going to the lab,
setting up your PC and then Okay. doing some मतलब research. start हमने lab से ही करना है, मतलब you have to set up your PC, then उसके बाद ही आगे. Right, बिल्कुल. तो आपने तो काम किया, उसके बाद you are you following any extracurricular activities, going to some events. So that is, it is not just study. There's a bit of fun element as well in the PhD program. Excellent. That is good to know. मुझे लगता है मैं ज़्यादा encourage हो गया हूँ to pursue my own PhD program at LUMS. That wouldn't be in computer science, of course. Okay, Dr. Agha, bringing you to the close of our podcast today. I would appreciate if you would expand on the funding opportunities available to students considering to apply to the MS program. PhD program to मेरे ख्याल है all funding. Is there a stipend as well? Yes, there is a stipend which has recently been increased. In fact, अभी 2-3 रोज पहले ही official हुई है वो चीज़. So it is a fully funded program. PhD से शुरू करते हैं, उसके बाद masters की तरफ जाते हैं. So PhD is a fully funded program, as you have said, and it has guarantee of funding for your 4 years of PhD. And guarantee in the sense कि आपकी performance evaluate होती रहती है, and if you meet the requirements, then you continue with your PhD. और इसमें ये है कि ना सिर्फ कि आपकी ट्यूशन वगैरह सब कुछ वेव्ड है, बल्कि इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, विच आई थिंक इज़ 60,000 राइट नाउ. सो ये हो गया PhD का. अच्छा, बाय द वे इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है. सो 60,000 इज़ द मिनिमम. So if the professor has some funding, which most of the professors have, वो अपने PhD स्टूडेंट्स को यूजुअली इससे काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं. सो थोड़ा ज़्यादा से लेकर काफ़ी ज़्यादा तक. सो एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि कब अवेलेबल है. सो इट कैन लाइक कीप मूविंग अप एंड डाउन. लेकिन वो यही है कि जब ज़्यादा अवेलेबल हुआ ज़्यादा कर दिया, जब कम हुआ कम हो गया. So depending on the project, depending on the funding associated है, तो the student is gonna benefit as well. Exactly. Okay. तो ये तो हो गया PhD का. जो मास्टर्स है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी. एक तो चीज़ ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर. सो वी नीड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीनियरिटी फॉर आवर वर्क. सो उसमें ऐसे भी हैं कि जो ज़रा थोड़ा सा कम टेक्निकल वर्क्स हैं, उसमें हमारे अंडरग्रेड्स भी आ जाते हैं, सीनियर्स आ जाते हैं. फिर ये है कि हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं. एंड many of those positions are paid. So research assistant, research associate positions, हमारे स्टूडेंट्स दौरान स्टडी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इन पेड कैपेसिटीज़. तो ये भी होता है. अच्छा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें ये है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं. सो टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फुल वेवर्स मिल जाते हैं, हाफ वेवर्स मिल जाते हैं. इसी तरह से हमारे पास इंटरेस्ट फ्री लोन्स की ऑप्शन है, और फिर फाइनेंशियल एड की है. सो यू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, यू कन्विंस कि मुझे इस वक्त नीड है, और उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, वो भी बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें अकोमोडेट हो जाती हैं. So in the truest sense of the word, we can say कि हमारा प्रोग्राम जो है इसमें completely need blind admission policy है इसके अंदर, and there are multiple ways to finance your program. आपने बड़ा अच्छा कि आपने mention किया कि LUMS interest free loans भी हमारे पास. If you're not getting a tuition fee waiver, then you could also apply for a LUMS interest free loan, which would mean कि आपको भी एक loan मिल जाएगा. And once you're done with your degree program, 6 months after the completion of the program, you will start paying it back to us in very easy installments, and over a couple of years, if I'm not wrong. All right. Thank you very much, Dr. Agha Ali and Abdul Hameed, for and Dr. to be soon, inshallah, for joining us at this podcast and making it more insightful as well. And if you are interested in applying to any of the two programs offered at the graduate level, of course, at the Department of Computer Science at Syed Babar Ali School of Science and Engineering, please make sure we're getting your online application latest by April 11th, and your supporting documents online by 14th April. Take care of yourselves. Allah Hafiz.